Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are continuing our issue of shares topic, and yes, we will discuss in both the language and we'll understand the complete concepts about the issue of shares for consideration other than cash. Now we are going to cover the things which is other than cash. So, issue of shares for consideration other than cash. Okay. सो आज के सेशन में हम इशू ऑफ शेयर्स के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम कवर अप करेंगे इशू ऑफ शेयर्स जहाँ पे कैश के अलावा जो है शेयर्स को इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जनरल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो there are situations it is very important to understand about whenever you are covering any topic to understand that particular meaning. Okay, so yeah, the organizations that is a company is allotting some shares to the shareholders, but there are a situation when the allotment has been made of the shares against other than cash, that means not in a cash form, which is not received in the cash form, and in that case we called it that issue of shares for other than cash. So there are few cases in which the other than cash situation we come across. Okay, so I'll highlight those three cases. Okay, so I'll divide those cases into three parts and we will discuss each and every part on standalone basis. Okay, we understand the general entries also. So the first case, in this case we have that when the shares are issued to the promoters of the company, issue to promoters. Okay, so I'll mark it as case 1. Okay, so when the shares are issued to the promoters of the company, for what? Because these promoters who provide some kind of services to start that particular company, they provide various services for the incorporation of the company. So in that case, the company is decided after the incorporation to issue the shares, which is not in the form of cash, that is an other than cash. They issue the shares to the promoters of the company, and yes, that was because of it generates some kind of goodwill. Why? Because that promoter has put in their talent and they provided various services to get a foot or get a base for that company's incorporation, and that's why it would generate a goodwill for that particular company. Okay, so during the incorporations, when the promoters is allotted some kind of shares on the incorporation of the company, we will call it as goodwill. Okay, so what can be the possible journal entry? So we all aware that goodwill is an intangible asset. Intangible asset, and we are going to give this promoter a shares. Okay, so that promoter giving me a company, that promoter giving me a company, and that is against the I means company. When you will solve the question, you will be the company. Now I am the company. Okay, so you being a promoter, you give me the company. Okay, I did this registration work, I did dash and do, I provided n number of services. Okay, now please allot me a share. So what I do now, whatever you are giving to me, okay, that's you are passing me your goodwill, and that will be my goodwill now. My means a company, and I'll adjust it against the share capital. Now whatever you are giving me, it will become my share capital, right? So during the incorporation of the company, what can be the possible journal entries? Goodwill account debit to share capital. Why share capital? Again, I want to recall you because it's because I am allotting you some kind of shares which is not in the form of cash, but for the services you rendered during the incorporation, you are transferring your goodwill. Okay, so this will be the fair value, that is an agreed price. Hope you satisfied with the journal entry. Please do not memorize any kind of journal entry. Try to understand everything here. Okay, so give me a moment to conclude in other language. इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर एंड कैश मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जब कैश के फॉर्म में हम शेयर्स को इशू नहीं कर रहे, हम यानी कंपनी। अभी जब मैं आपको डिस्कस करूंगी तो पूरे सेशंस में मैं कंपनी होंगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कंपनी बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भाई आप कई सिचुएशन होती है जब आप कैश के फॉर्म में शेयर्स को इशू नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन
फॉर कैश, कंसिडरेशन जिसका मिलेगा कैश के अलावा। तो इसमें हम 3 केसेस को देखेंगे। पहला केस है कि जब हम शेयर्स जो है प्रमोटर को इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उसने जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की है उसके बदले में हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम उसे कंपनी में शेयर्स दे रहे हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे ना, को फाउंडर्स आते हैं या फाउंडर्स आते हैं, तो वो क्या, वो एक तरीके से प्रमोटर का भी रोल प्ले करके आ गया अगर, ठीक है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी बनाई, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को सब कुछ कई हद तक ला करके खड़ा किया है। तो उन्होंने जो सर्विस दी है उसके बदले में हमने कंपनी में क्या दिया, उसे शेयर दिया। तो अब आप जो दे रहे हैं, अब आप हमें गुडविल दे रहे हैं, और हम जो आपकी स्टैंडिंग है वो मेरे लिए गुडविल है, और उसके अगेंस्ट में मैंने आपकी एक शेयर कैपिटल खड़ा कर दी, क्योंकि आपका जो वो सर्विसेज है वो मेरे लिए एक तरीके से पैसे के फॉर्म में इन्वेस्टेड है, बट वो पैसा नहीं है, बट वो सर्विसेज है। आप, होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो वो क्या हुआ, शेयर कैपिटल हो गया। तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, जब भी बिजनेस या कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, तब हम जब प्रमोटर को उसकी सर्विस के लिए शेयर्स देंगे, है ना, शेयर इशू करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किस अमाउंट पे होगा, जो भी फेयर वैल्यू होगी, जो भी एग्रीड प्राइस होगा पार्टीज के बीच में। क्लियर? याद नहीं करेंगे किसी भी जनरल एंट्रीज को, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों गुडविल और क्यों शेयर कैपिटल, ठीक है। ओके, next, moving ahead with the case 2. So there are cases where company does not have a sufficient fund to purchase some kind of fixed assets or for the payment to the creditors. So in that case, what they do, they are not paying, they are buying the fixed asset, but they are not paying the cash or some check. They are issuing the shares, or to the creditor, they are issuing to the shares, that is against the cash, not in the form of cash, but in lieu of the cash. Okay. So for second case will be for purchase of fixed asset, or we can say pay to creditor or any outside liability. So that can be the case too. Okay, there might be a situation, case two. So during the this kind of dealing, like when the company decided to issue these shares, which is issued by the vendor, it can be either at, it can be issued at par or at premium. Why not discount? We already learned in the past session, while covering the session on discount, that at what situation a company can issue the shares at discount. Please recall that. Okay, so there are a situation that it can be issued at par or it can be issued at premium. So when me, a company, purchase an asset, so I bring an asset from whom? You, being a vendor. So what the entry I will pass? I purchase the asset. Suppose any asset. Sundry asset, I can mention it as a sundry asset, individually, whatever, it can be anything. Okay, so if you have a 10 assets, so we have to mention every asset specifically, individually, on standalone basis. Clear? To vendors account. Okay, means I have to create that parties in front of me. So this is the first entry, that I bought the asset. So with the purchase price, I have to mention here. Okay, with the purchase price. Okay, then what I decided, that I won't pay you by the cash or check or whatever thing, I'll issue you the share. Now there stands the share capital. Hope you get it. To whom? To the vendor, that particular vendor, against that particular asset. Okay, so now I decided to issue a share. So first case, I decided to issue the share at par. Okay, to whom? To vendor, vendor account debit, and now the it becomes the share capital. Hope you satisfy with this. Okay, so we can mention here at nominal value. Hope you satisfy. Please do not memorize anything here. Okay, and what if I decided to issue these shares at a premium? At premium, if I decided to issue the shares at a premium. To whom? To vendor. Okay, because vendor accounts include both the face value and the premium amount. That is a complete purchase price. To share capital. Okay, to securities.
premium account. With this, we have here the purchase price. Okay, here we do the nominal value of that particular share, and this will be the premium value. I hope you satisfy with these journal entry. Please do not memorize. That's why I'm tackling. I'm not exactly rushed up to solve these kind of numerical. I'm just introducing with your basics, and I'm connecting you with the basics, so that even whatever the surprises come up in your examination, you are easy and handy to solve those surprises. Okay. सो प्लीज गिव मी अ मोमेंट टू क्विकली कंक्लूड इन द अदर लैंग्वेज. सेकंड केस जो है, जब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है अपने फिक्स एसेट्स को परचेज कर रही है, या कोई एक ऐसा क्रेडिटर है खड़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट में जिनको वो कैश में या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाह रही बट शेयर इशू कर रही है, तो सेकंड केस हम उस सिनेरियो में लेंगे. ठीक है, तो सेकंड केस में हम जो कंपनी है वो या तो शेयर पार पे भी इशू कर सकते हैं या प्रीमियम पे भी. डिस्काउंट पे क्यों नहीं इशू कर सकते, आप इसको रिकॉल करेंगे. ठीक है, तो मानिए कंपनी ने एसेट परचेज किया. ठीक है, एसेट लेके आया, मैं कंपनी एसेट लेकर करके आई, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स. वेंडर जो भी जिससे भी मैंने लिया हो. ठीक है, तो इंडिविजुअली जितने भी एसेट होंगे सबका इंडिविजुअली एंट्री होगा. क्लियर. परचेज प्राइस आपकी चली गई. उसके बाद मैंने कहा कि अब उस वेंडर को मैं कैश या चेक नहीं दूंगी, यानी कैश और बैंक नहीं आने वाला. अब उसको मैंने शेयर इशू करना है, तो क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा. सिंपल. वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पार की एंट्री ये हो गई नॉमिनल वैल्यू से. लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू कर दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. क्लियर है. कुछ भी याद नहीं करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, नहीं तो एग्जाम हॉल में क्या है ना, बैठने से क्या है सारे क्वेरीज निकल के चले आते हैं, और अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई क्वेरी नहीं आएगी. क्लियर. Okay, now just move ahead with the case 3 or the last case of issue of shares for other than cash. There can be a situation when the shares are issued or even exchanged during the time of merger. Okay, or it might be a situation of business purchase. So we can call this as a business purchase, or we can call this as a merger. This will be your case 3. So how you will deal with the case 3? Case 3, right? So there is a when some organization are going under the merger or in the purchase consideration, so now it's a time came up, we will deal this thing more importantly while doing the amalgamation chapter, but I just want to draw your highlights here. So there is a purchase consideration where a company is giving to the other, yani purchasing company is giving to the acquiring. Okay, so in that case we have to check, well, what is the situation of that net asset. So when the purchase consideration is more than the net asset acquired, that means an old company, okay, they have some assets. Okay, and there is a new company. Okay, so these assets is took over by the new company or they can be purchased. Okay, so now we have to check. Obviously they are purchasing the company, they're taking their assets, liabilities, and even the shareholder, and they issue the shares. Hope you're getting. So the net asset, this is will be the net asset. Okay, so we have to check whether the net asset versus purchase consideration, means whatever the consideration new company paid to the old one. Okay, so we have to check the status of net asset versus purchase consideration. So in the first scenario, when the net asset is more, that means we can say in first scenario it is 10 for example, and this is 8. Okay, so we have to check when the purchase consideration is more, that means purchase consideration is more, 18, market 18. This means the company is giving something for goodwill. Getting? Because they are paying something more which is not valued. Means the net asset is less, but company is ready to pay more just because they carry some kind of goodwill. That's why they are ready to pay more than their worth. Okay, so what will be the entry? Sundry asset account debit, that may be any asset, all the assets should be written here individually. Okay, at agreed price, whatever be the agreed price, agreed purchase price. Okay, so we mark it as goodwill. Okay, here goodwill will be difference. Okay, and company also took the liabilities, sundry liabilities. Okay,
So whatever be the liabilities and whatever be the account, and to vendor. Hope you satisfy with the entry. Okay, so this is the first situation when the company is ready to pay 18 rupees, even their net asset stands for 10 rupees. Now there is an opposite situation. Okay, there is a opposite situation when we can see is their net asset versus purchase consideration, and here the net asset is 18 but company is paying less. That means they are taking liability. Company is not more a good profit generating can be. Okay, so journal entry will be sundry assets. Definitely it can be on individual basis at agreed price, at agreed price, to sundry liabilities. Okay, so and to the vendor, whatever the price of the vendor at agreed purchase price to the vendor, and to capital reserve. Okay, capital reserve, that means a difference of what you will show, difference between net asset and purchase consideration. Okay, so whatever the purchase price and net asset, that will be go to the capital reserve when the purchase consideration is less. That means the new company is paying rupees 10, even the company's net asset was of 18. Hope you are getting, nothing to memorize, everything is very easy. So give me a moment to conclude in other language. हमारा लास्ट और थर्ड जो केस है वो बिजनेस परचेज या मर्जर एक्विजिशन का केस है. हम एमलगमेशन के चैप्टर को इसको और इन डिटेल में कवर अप करेंगे, बट हम आपको यहाँ के सेशन में आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं या आपसे सर्कमस्टेंसेस पूछी जाती है कि कब कौन कौन से केसेस में अदर देन कैश का सिचुएशन आ सकता है जब शेयर्स को इशू किया जाए. ठीक है, तो आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए कि भाई 3 केसेस आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें 2 केसेस होंगे कि एक तो कंपनी, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी. कई बार होगा ए और बी 2 कंपनी है जिसमें बी ए को लेके जा रही है, या बी ए है एक बी को लेके जा रही है, एक जन को लेके, या ए और बी दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बन रही है, सी बन रही है. इसको हम एमलगमेशन में और अच्छे से समझेंगे. तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम ओल्ड और न्यू की लैंग्वेज में बात करते हैं. ठीक है, तो जब ओल्ड कंपनी है वो जा रही है, उसके कुछ एसेट्स खड़े थे बुक में. ठीक है, मानो वो एसेट्स कितने भी रुपए के हों, वो टोटल एसेट्स को हम बोलेंगे नेट एसेट. अब ये उठ के जा रही है नई के पास, तो नई उनको कुछ वापसी में देगी, उसको बोलेंगे हम कंसिडरेशन देगी, परचेज का कंसिडरेशन देगी, जो परचेज किया है उसके बदले में कुछ देगी. ठीक है, तो उस केस में 2 सिनारियो होते हैं. कई बार ऐसा होगा कि जब जो परचेज में दे रही है, यानी जो कंसिडरेशन दे रही है वो ज्यादा होगा. यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक 2 नंबर डिजिट को लेके चलते हैं. जो कंसिडरेशन दे रही है वो 18 रुपए है. ठीक है, और उसकी नेट एसेट 10 रुपए थी, यानी ज्यादा दे रही है. क्यों? कुछ तो बात होगी, यानी गुडविल. ठीक है, तो जो भी एसेट लेके जा रही है कंपनी, जितने पे एग्री हुए हैं दोनों आपस में, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सारे एसेट को इंडिविजुअली दिखेंगे. ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट जो आपका डिफरेंस होगा, सन्ड्री डेटर लाइबिलिटीज टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट. ठीक है, बिल्कुल इजी एंट्री है, रटना नहीं है, बिकॉज वेंडर को हमने क्या पेमेंट करा है, हम क्या चीज ले जा रहे हैं उसकी एसेट और लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, और हम परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हैं उसकी टोटल नेट एसेट से, तो गुडविल बन रहा है. यही रिवर्स सिचुएशन अगर हम कम कंसिडरेशन दे रहे हैं, यानी उसके एसेट की वैल्यू 10 रुपए है और हम 8 रुपए दे रहे हैं, कम दे रहे हैं उसे, यानी कुछ तो गड़बड़ है कंपनी में, तभी ले रहे हैं हम उसे. तो उस सिचुएशन में आपका कैपिटल रिजर्व खड़ा हो जाता है. इससे आपके परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट के डिफरेंस है. ठीक है, सो आई होप आपको ये डिफरेंसेस और ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो चुकी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छे से क्लियर हो चुका हो. इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम इंडिविजुअली इन सारे नैरेटिव्स को, इन सारे जर्नल एंट्रीज को, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द एग्जामिनेशन गोइंग टू ब्रिंग अ सरप्राइज फॉर यू. सो आई वांट टू प्रिपेयर यू with each and everything. Being a commerce student, you must be very strong enough to deal with all the challenges, and I want to prepare you for every kind of challenges. So keep revising your course. We'll bring up with some more on commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.